my dear students, I am Pranjal Tripathi standing in front of you, and I hope you have done well in your PT1 examinations. Today I am here to teach you the third chapter of physics, that is electricity. It is in your half-yearly examination syllabus. So first of all, let's start with what is a basic idea about electricity. So students, let's start with the name itself. What is electricity? Electricity, as we have understood in the previous classes, that it is a source of energy. Electricity is a source of energy and that is used to run our electrical appliances. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दे विल नॉट रन. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज ए सेकेंडरी एनर्जी सोर्स दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कन्वर्टिंग द प्राइमरी एनर्जी सोर्स. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो क्या है? एक सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है और प्राइमरी एनर्जी सोर्स से मिलती है. When we convert primary energy sources, what are primary energy sources? These are coal, which we get directly from the nature, natural gas, petroleum. These are the primary energy sources. When these primary energy sources are converted, then we get electricity. Now we talk about the phenomena of electricity. Electricity is flown into a conducting metal or conducting wire by the free electrons. Means कि इलेक्ट्रिसिटी तभी किसी कंडक्टिंग वायर या किसी कंडक्टिंग मेटल में रन करेगी जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. We know that there are two types of materials, that are conductor and insulator. What are conductors? Conductors are those materials which are good conductor of electricity, as we can understand that they pass electricity through them very easily. Why is it so? We have read this property several times, that conductors conduct electricity. They pass electricity through them. We have not even calculated or given emphasis about what's the property, why it is so. It is because of free electrons. Conductors have free electrons. अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि हर सभी चीजों में एटम्स होते हैं. एटम्स के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस. नाउ इन कंडक्टर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली पैक्ड. मींस ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उसके जो ऑर्बिट है वहां से टाइटली पैक्ड ना होके लूजली पैक्ड होता है और वो फ्री फ्लो कर जाता है. बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड. वो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर पाता. जब कोई चीज टाइटली पैक्ड होगी तभी तो वो हिलेगी डुलेगी नहीं. लेकिन अगर वो लूजली पैक्ड होगा इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हिलेगा डुलेगा और इट विल फ्लो. सो द मेन रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. What is electric charge? Electric charge is the property of matter
by virtue of which when an electric charge particle or substance is brought near to an other electrically charged particle or substance, then it will experience a force. कहने का मतलब क्या है कि when जब एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल दूसरे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के पास आएगा, then this electrically charged particle will experience a force. Force के क्या करेगा? फील करेगा, महसूस करेगा. And electrically charged particles, these electrically charged particles are basically of two types, that is proton and electron. We can basically say that electric charge is of two types, positive charge and negative charge. The positive charge is known by the name proton and the negatively charged particle is electron. प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल. द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, let's know about the unit of electric charge, that is C, coulomb. Coulomb is the SI unit of electric charge. So the charge on proton, that is positively charged particle, is 1.6, positive 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And what is the charge of electron? The charge on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is very simple. Proton is just positively charged and electron is negatively charged. The magnitude of both charges are same, but the difference is of positive and negative. P for proton, P for positive. You can easily remember that by this. So our next topic is properties of electric charges. Now our next topic is properties of electric charge. अब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी? So the first property of electric charge is like charges repel each other while unlike charges attract each other. I mean to say that like charges means if this charge is positive and this charge is also positive, then they will repel each other, means they will not attract, they will repel each other, एक दूसरे से दूर भागेंगे. While if this charge is positive and this is negative, then they will attract each other, they will come close to each other. This is the first property. Second property is what? Second property is related to the conservation of charge. The second property indicates that the total charge of an isolated system remains constant or conserved. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम है, उसका कोई चार्ज है, तो उसको हम ऐसा नहीं हो सकता है कि we will make difference in the total charge. जो भी उसका टोटल चार्ज रहेगा वो वही रहेगा, because charge can neither be created nor be destroyed. चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते. जो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज है वही रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते. We cannot change that. The third property of charge indicates that the total charge of a system is the algebraic sum of all other charges present in that system at different areas, at different positions. I mean to say that if there is an isolated system like this, here charge is something different, here is 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 different. I mean to say at different positions the values of charge is different, and if we have to calculate the total charge of this isolated system,
then we will do just algebraic sum. Sum of all these charges will equal to the total charge of isolated system. Now the fourth or the last property of charge is quantization of charge. What does it mean? We get charge from nature in the smallest unit, or we can say the smallest unit that is present in nature. We have indicated it by means of E, means electron. We have assumed that in our nature the smallest unit of charge that is present is E or electron. इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज अभी तक हमारे पास नहीं है या नेचर में प्रेजेंट नहीं है. इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट and all other charges we calculate is just an integral multiple of that electron or charge of electron. Means हमारे पास सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रॉन है. अब अगर हमें चार्ज कहीं मेजर करना है तो वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल the total charge is equal to me. M is what? Numbers. M may be 1, 2, 3, 4 or dot dot dot. That's means n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है. And E is what? Charge of electron. E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी जो यूनिट है हमारे पास मेजर करने के लिए चार्ज की, दैट इज इलेक्ट्रॉन. हम लोग अगर हमें कहीं बड़ा चार्ज मेजर करना है तो वो भी हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेजर करेंगे. हम लोग देखेंगे वहां पर हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज हो सकता है n की वैल्यू 6 हो सकता है 7 हो सकता है 100 हो. बट वी विल मेजर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ E. हमेशा 100 का मेजरमेंट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज. दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. एंड यस, because charge can either be positive or negative, so here we write plus or minus. If charge is positive, then we will take plus any. If charge is negative, then we will take negative any. N is what? Numbers 1, 2, 3, 4, and E is the charge of electron.